Hi everyone, Virat sir here, your own Virat sir, who's your photography mentor, and I'm just creating this video to share my thoughts and ask you about yourself. कैसे चल रहा है सब कुछ, क्या हो रहा है, कर रहे हो, क्या कर रहे हो घर पे बैठे बैठे. अगर तुम लोग पक रहे हो तो प्लीज़ ये मत बोलो that you have something with you and that something is photography. Okay, and that is the power that you have. Even in the lockdown period, nobody can lock you or nobody can lock your talent. Remember this. Okay, so बेसिकली जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप का, ये इसके लिए बना है कि अपन एक दूसरे को मोटिवेट कर सके. क्या हो गया कल, इवन आई वॉज डूइंग सम अदर थिंग्स एंड क्रिएटिंग स्टफ ऑनलाइन ऑन फोटोग्राफी कंटेंट एंड एवरीथिंग. लेकिन जस्ट टू टेल यू, कल मेरे घर पे आम आए and I was really happy to see them. Firstly, because I want to eat them, but the other reason is that the color and the texture that mango was throwing up, and the window light on the mangoes, it totally irresistible था. मैं गया और मैंने अपना कैमरा निकाल के फोटोज निकालने को शुरू किए और कम से कम 15-20 मिनट में मैंने अलग अलग एंगल से उसके सिर्फ मैंगोज के फोटो निकाले और इतना मुझे बेस्ट लगा. माई एंटायर माइंड वॉज रिफ्रेश्ड. ओके, सो मुझे मेरे जो ओल्डन डेज है वो याद आ गए. जब मैंने कैमरा सीख रहा था तो मैं घर पे फोटोग्राफी करता था और घर के ऑब्जेक्ट्स क्लिक करता था. घर पे मैंने टेबल लैंप एक कनेक्ट किया था और मैं अलग ऑब्जेक्ट्स को टेबल लैंप पे क्लिक रोटेट करके सब्जेक्ट्स को क्लिक करता था एंड खुद ही अपने आप को इवेल्युएट करता था और अंडरस्टैंड करता था कि कैसे मैं और बेटर हो सकता हूँ. तो आई थिंक ये जो टाइम अपने को मिला है, वी कैन यूटिलाइज दिस टाइम. ये जो भी लॉकडाउन का टाइम होगा, मे बी अभी ये 1 मंथ हो गया, मे बी लाइफ लास्ट फॉर अनदर 2-3 months, वी डोंट नो. बट व्हाट इट विल डू इज either it will make you a better photographer or it will not make you a better photographer. You will forget photography. दोनों में से एक चीज होगा. So as long as you are in touch with it, you can definitely improve on your photography skills. And trust me on this, creative person के लिए घर हो या घर के बाहर फर्क नहीं गिरता है. You can create thousands and thousands of pictures if your fundamentals are right. And we have all learned what are the photography fundamentals and how you should develop a creative eye. Okay, so there are around 100 people in this group and I'm seeing only 8 to 10% are actually posting the pictures. What about others? What are they doing? Okay, I want everybody to come and participate in this group and let's motivate each other, guys. Come on, Vincent, how's your Josh? Come on, I want to hear it. Hi, sir. Okay, after this video, if your Josh is high, I want to hear Josh is high. Hi, sir. Alright. Now, to keep our Josh motivated, I have thought of something. I have thought that I'm going to give you a topic and you're going to click it, but in a very limited time, because only if I push you in a limited time, you will utilize your brain. If I'm going to give you a long time, then you will not come up with anything. Okay, only when your deadline is near, you will come out with the best version of yourself. That is, sure shot. So tomorrow is a Sunday and I'm going to give you a topic. Okay, I'm going to give you a topic right now. अभी मैं तुम लोगों को एक टॉपिक देने वाला हूँ और तुम लोग को वो टॉपिक पे पिक्चर्स क्लिक करने हैं और वो पिक्चर्स तुम लोग को FTP के ग्रुप में पोस्ट करने कल शाम को 5 बजे तक. ठीक है, वो टॉपिक पे आपको 3 पिक्चर्स क्लिक करने. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉपिक. द टॉपिक इज लाइफ इन लॉकडाउन पीरियड. द टॉपिक इज लाइफ इन लॉकडाउन पीरियड. ये टॉपिक के आप 3 पिक्चर्स निकालो. ट्राई टू टेल अ स्टोरी थ्रू दिस लॉकडाउन पीरियड. ओके, क्या हो रहा है लॉकडाउन पीरियड में? आप बोर हो, आप एक्साइटेड हो, आप मोटिवेटेड हो या आप लोनली हो, कुछ भी हो सकता है. जस्ट शेयर पिक्टोरिकली क्या हो रहा है. अगर 3 महीने बाद लॉकडाउन पीरियड को आपको एक्सप्लेन करना है कि लॉकडाउन पीरियड में मेरे फीलिंग्स क्या थे, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो आपकी पिक्चर्स के थ्रू आप कैसे दिखा सकते हो. दिस इज द टॉपिक. And this topic, you start clicking it from tomorrow. Tomorrow you have whole day. By 5 o'clock, post your pictures on FTP group. Okay,
You can also post process it, but do not post process it heavily. I don't want a complete digital manipulation of pictures. Just post it, and we will announce the results at the end of the day. The best three participants will get a FTP digital certificate for the best pictures, and we will mail them these digital certificates. So after this video, if you are in and if you are a photographer, अभी भी तुम लोग में वो जिंदा है, वो अंदर वाला फोटोग्राफर जिंदा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हाय सर बोलो, रिप्लाई करो, और कल मेरे को देखना है कि तुम लोग कैसे और कितने अच्छे फोटोग्राफ्स निकालते हो. लेट्स शो टू पीपल that we cannot be locked down. A photographer cannot be locked down. So people who are, the people who win in the prize, who are really taking good pictures, what we are going to do is, we are going to post them online on our Insta and FB pages, and we are going to tell people that photography is something that is with you till your last breath. Okay, so I just want to tell you this one more thing is that there is a research conducted by one of the National Geographic group, and they conducted a research about how people can live more than 100 years, and in the entire world they found out there are such 5 places, and they found out that there are various ways of their lifestyle, and one of the best thing in that is that all the people who have lived more than 100 years, they have a purpose in their life. So when they get up, they know what is their reason to get out of their beds. Okay, so they have a deep purpose in their life. Can photography be a deep purpose of your life? No, it doesn't matter. It doesn't matter whether you are earning out of it or whether you are doing a passion, your own passion. Okay, so I want you to create this sense of deep purpose. I want you to participate. I want you to share, and I want you to motivate each other. Alright, see you tomorrow. I want to see the pictures. The topic is life in lockdown period, and let's see what's the response, and I'll be waiting for your pictures. Please do not upset me, and I hope you will be definitely participating, and I expect the maximum amount of participation in this topic. Thank you so much.